Hello student, our next one is mining structure, that is also in unit 12. Mining structure. The mining structure defines the data from which mining models are constructed. It specifies the source data outlook, the number and kind of columns, the option partition into training and testing group. A single mining structure can support multiple mining models and then share the identical domain. The following diagram shows the connection of data mining structure of data source and its डाटा माइनिंग मॉडल्स. जैसे यहाँ पे डाटा सोर्स है, माइनिंग स्ट्रक्चर, कस्टमर इनकम, एज, जेंडर, रीजन, ठीक है, कस्टमर आईडी फिल्टर, देन एज इज ग्रेटर देन 30. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कनेक्शन बनाया गया है, ठीक है. सो दैट्स इज जस्ट अ माइनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है. सो द माइनिंग स्ट्रक्चर जैसे कि हमने फिगर में देखा, इज बेस्ड ऑन डाटा सोर्स दैट कंप्रोज मल्टीपल टेबल और व्यूज that connected by the customer ID field. One table contains data about customer such as region, age, earnings and gender, while the associated nested table contains multiple row and additional data for each customer such as goods and customer has brought. The figure 12.1 shows that multiple model can be constructed one mining structure, and then the models can be different columns from different structure. Here model 1 using customer ID, income, age, region, filters and data on region. Model 2 use customer ID, income, age, region, filters and data on age. Model 3 uses customer ID, age, gender and nested table with no filter. As the model use different columns for input, and because of two of the models also restrict the model that is used in model by applying a filter, the models might have very different results even though they are based on same data. मतलब अगर उनका जो मॉडल है सेम है लेकिन फिर भी वो क्या है, डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. Then defining a mining structure. Setting a data mining structure includes the following steps. First of all, defining a data source. Then you have to select the column of data to include in the structure and define a case key. Define a key for the structure. Then key जो भी आपने इंक्लूड करनी है वो आपने इंक्लूड है. Specify whether the source data should be separate into a training set or testing set or not. Then you have to process the structure. Data source for mining structures. When you define a mining structure, you use columns that are available in exiting data source view. जब भी आप कोई माइनिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो तो यू हैव टू यूज कॉलम्स दैट आर अवेलेबल इन एग्जिटिंग डाटा सोर्स व्यू. A data source view is distributed object that permit you to combine multiple data sources and using them in a single source. The initial data sources are not evident to customer application, and you can use the properties of data source view to modify data kinds, create aggregation or analysis columns. जो डाटा सोर्स व्यू है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्जेक्ट दैट परमिट यू टू कंबाइन मल्टीपल डाटा सोर्सेज एंड यूज देन ऑन अ सिंगल सोर्स. The initial data sources are not evident to consumer applications, and you can also use the properties of data source and modify the data kinds. If you develop multiple mining models for the same mining structure, the models can be used different columns for the structure. Also each model can be used the columns from the structure in different ways. मतलब जो ये मॉडल्स होता है, ठीक है, दैट आल्सो यूज द कॉलम्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट वेज. माइनिंग स्ट्रक्चर कॉलम्स. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइनिंग स्ट्रक्चर आर द माइनिंग स्ट्रक्चर कॉलम्स. जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, व्हेन रिकाउंट द डाटा दैट यू डाटा सोर्स कंप्राइज, दिस कॉलम्स कंप्राइज डाटा सच एज डाटा टाइप, कंटेंट, टाइम, हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. द माइनिंग स्ट्रक्चर डज नॉट कंप्राइज डाटा अबाउट हाउ कॉलम्स आर यूज्ड फॉर एग्जैक्ट माइनिंग मॉडल, बट अबाउट द काइंड ऑफ एल्गोरिथम दैट इज बिल्ट फॉर अ मॉडल. मतलब that doesn't matter about the columns, that matter about the algorithm, and the data is characterized in the mining model itself. A mining structure can also comprise nested table. मतलब उसमें nested tables भी होते हैं. Nested table comprise one to many relationship between the entity of a case and then its associated attribute. The customer identifier resident is the entity and the purchases are the related attribute. सो जो माइनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या है, टेबल्स भी होते हैं और जो कस्टमर आइडेंटिफाई दैट इज जस्ट अ एंटिटी, एंड परचेज जो होगा उसके साथ क्या रिलेटेड एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, कि कस्टमर ने क्या परचेज करा, ठीक है. माइनिंग स्ट्रक्चर कॉलम्स. नेक्स्ट, डिवाइडिंग द डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू डिफाइन द डाटा फॉर द माइनिंग स्ट्रक्चर, you can also specify that some of the data can be used for training and some for testing. जब भी आप डाटा उसको डिफाइन करते हैं, you have to define that some of the data for training and some for testing. Therefore, it is not longer necessary to separate your data in advance of creating a mining structure. Instead, while you create your model, you can specify that certain percentage of data be held for testing and then rest used for training. Enable drill through.
You can add columns to the mining structure even if you do not plan to use the column in specific mining model. This is helpful. For example, you desire to get the email location of your customer in a clustering manner without using the email address thought of the analysis method. ड्रिल थ्रू मतलब जैसे इसमें ये काफ़ी फास्ट होता है, फास्टली हम इस चीज़ को असेस कर सकते हैं. सो दिस इज हेल्पफुल. फॉर एग्जाम्पल, यू डिजायर टू गेट द ईमेल लोकेशन फॉर कस्टमर क्लस्टरिंग मॉडल विदाउट यूजिंग द ईमेल एड्रेस. Processing mining structure. When you process a model mining structure, analysis services create a cache that stores statistical about the data, information about how any continuous attribute are discreted, and other information that is later used by mining models. Viewing data mining structure. In SQL Server data tools, you can use the mining structure of data mining designer to view the structure of columns and their definitions. अब क्या होता है कि जो व्यूइंग माइनिंग स्ट्रक्चर होता है, जो SQL सर्वर है, डाटा टूल्स है, यू कैन आल्सो यूज द माइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाटा माइनिंग डिजाइनर टू व्यू द स्ट्रक्चर कॉलम्स एंड देयर डेफिनेशंस. दैट्स अ व्यूइंग. Configuring algorithm parameters. You can change the parameters supplied with the algorithm that you use to construct data mining models to customize the results of the model. The algorithm parameters supplied in SQL Server Analysis Service change much more just properties on the model. They can be used to fundamentally adjust the way that the data is processed, grouped, and displayed. Change the procedure of analysis such as clustering procedure. Control feature selection behavior. Identify the dimension of data sets or probability of rules. Control branching and deepness of decision tree. So that is the configuring algorithm parameters. Change an algorithm parameter. On the mining model, data mining design in SQL Server tools, right click the algorithm type, then select set algorithm parameter. The algorithm parameter dialog box will be open. In the value column, set a new value of algorithm that you want to change. If you do not want to enter new value column, analysis services use a default parameter. अगर आप नई वैल्यू नहीं ऐड करें तो वो डिफॉल्ट यूज करता है. Then click OK. The algorithm parameter set the new value and the parameter change will not reflect in the mining model जब तक आप इसको reprocess नहीं करते. ठीक है. So that's all about in the mining structure. I hope you understand it. Thank you.